I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. बात करते हैं मेकअप की। मुझे पता नहीं आज मैंने क्या करना है। एनी फर्दर टू लेट्स टेक इट। आज मुझे सबसे इजी ब्रोज करना है क्योंकि आईब्रो टुक अ लॉट ऑफ टाइम। काफ़ी काम की इसमें हाईलाइटिंग शेड में इसके सारे शेड है। सो आई टुक दिस शेड टू एनहांस माय आई लव हाउ इट टर्न्ड आउट। It looks good on me. It's important to set your eyes before eye makeup. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपके जो कलर पिगमेंट्स होते हैं वो अलाउड हो जाते हैं। और सेकंड थिंग इज दैट जो आपके आईब्रोज की शेप अच्छे से बनी नहीं होती तो वो इंस्टेंट लिफ्टेड हो जाती है। सो यू कैन सी नाउ इट लुक्स लिफ्टेड आईब्रोज लाइक इज द मेन थिंग। आईब्रोज आपकी अच्छी नहीं होगी ना तो डेफिनेटली आपका मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। सो हमेशा मोटिव रखो कि आप अच्छे से बनाओ और ब्लैक कलर कभी भी यूज़ मत करना आईब्रोज पे क्योंकि वो ड्रामेटिक नहीं लगेगा, वो ना वियर्ड लगेगा और वो डिफरेंट लगेगा कि वो इतना फेक लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो सारा आपका मेकअप रियून कर देगा। सो वी डोंट वांट दैट इन अ मेकअप राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट योर आईज हाई बेस। और उसके बाद हमें अपने आई शेडो पैलेट का कोई भी कलर लेके मतलब ट्रांसलूसेंट नहीं, हमें लाइक वाइट येलो लेके हमें अपनी आईज सेट करनी होती है बिकॉज कि वो मर्ज ना हो जाए, वो कलर्स मतलब ब्लेंडेड आउट ना हो जाए कि जब हम अपने कलर्स लगाए आईज पे वो ब्लेंड नहीं होते। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving. So that is a hack. Every girl should know. सभी लड़कियों को ये पता होना चाहिए। कोई भी टेप ले लो, आपका लाइनर ऐसे हर एक का होता है। सो मिस्टेक से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। सो मेक श्योर आपकी वैनिटी में टेप, कोई भी सैलो टेप, कुछ भी पर टेप होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गलतियाँ करते हैं। Until I discover
I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that, even if it don't happen fast. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who happen to life instead of it happening to them. I wonder if I'll make a difference like that.